Next is moment of inertia of a hollow सर हॉलो स्फीयर भी हो गया था. sphere हो गया. हाँ सर. Solid and radius are diameter. This is the sphere. We want to find the moment of inertia about this axis. So we choose as an element So we choose as an element the hollow sphere of radius y and thickness dy. And then we write vi, that is the moment of inertia of element, is equal to क्या था भाई hollow sphere का क्या moment of inertia होता है? Remember that solid sphere is made up of hollow spheres. What is the moment of inertia of a hollow sphere? What is the moment of inertia of a hollow sphere? आ गए भाई सब लोग सो रहे हैं. हेलो हेलो हेलो. What is the moment of inertia of a hollow sphere? What is the moment of inertia of a hollow sphere? मेरे को बताया ना कैसे बताया? हाँ, very good. हाँ, just Google and also see ना, ऐसा तो है. So this will be equal to 2 by 3 into mass of the element into radius of the element whole square. You must be very, very clear about this. So we have mass of the element here. This guy is the radius of the chosen element. So now we want an expression for dn. आवाज कम आ रही है, क्या बोल रहा है? आवाज कम आ रही है, वॉल्यूम कम आ रहा है कि बीच में ब्रेक हो रही है? So dm will be equal to volume possible नहीं है तो बाजू में बोल रहा हूँ, m divided by 4 by 3 pi r cube. Okay, what is this? What is this quantity? This quantity is the density of the material of the sphere. Okay, now in this case the density is constant, so I have just taken m divided by volume. If the density were variable, then you would have to write not m by 4 by 3 pi r cube, but here you would have to write rho into density into the volume of the red hollow sphere. And to find the volume, I told you what you have to do. You have to multiply the surface area with thickness. So 4 pi
y square. And let me make this absolutely clear what we have written. So what is this guy? This guy is the volume of the chosen element, which is a hollow sphere. And what is this guy? This guy is the surface area. This guy is the thickness of the chosen element. Okay. Now I'll substitute this. I is equal to 2 by 3 into dm. dm में मुझे एक अच्छी चीज दिखाई दे रही है कि 4 pi कैंसिल हो गया है. So this should be equal to 3m over r cube to y square dy into y square. So this quantity is 2 by 3. This quantity is dm. This quantity is y square. So what is going to happen now? 3 and 3 will cancel out. You will have 2m by r cube into y power 4 dy. And if you want to find the moment of inertia, then you have to integrate this. Always the integration goes from 0 to the radius. So we get 2m by r cube into r power 5 upon 5, which is equal to 2 by 5 mr square. Okay. Very, very important. Very, very important result. Just highlight this. Full derivation important है, क्यों नहीं है important? 2 by 5 mr square. कौन सा step नहीं समझ में आ रहा है derivation में? इसमें everybody, you have to be very, very clear. Okay, this type of derivation is very, very important. Why is it important? Because हमने यही काम सेंटर ऑफ मास में भी किया था, यही काम हमने यहाँ भी किया है, यही काम हम ग्रेविटेशन में भी करने जा रहे हैं, यही काम हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करने जा रहे हैं, यही काम हम मैग्नेटिज्म में भी करने जा रहे हैं. So if you are already, having a understanding of रजत अपना वॉल्यूम बढ़ा दो, वॉल्यूम बढ़ा. अरे मैं चिल्ला रहा हूं यहाँ पे. So if you have a knowledge of this derivation, right? So this derivation is not only ऐसा नहीं है, वो 10th क्लास वाली बात नहीं है मेरे बच्चों. इसमें कि आपको रटना है कोई, you don't have to ratify anything. This is something you understand, and you should understand. So that I want you to understand perfectly. Therefore, I have each and every term I have laid out कि मैंने ये लिखा है. अब इसमें अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही हो तो please tell me. I will explain again. And if you notice, this is the exact replica of the method of calculus that I had discussed a long way back. Method of calculus. Choose an element, and while choosing an element, while pinning down an element, you introduce a new variable and a d term, corresponding d wala term.
उसके बाद से you write the physical quantity that you want to find for the element. वही कर रहा हूँ सत्या. Okay, so you write down the physical quantity for the chosen element. Then using unitary method, you get everything into one variable. Okay, so what have I done here? मैंने क्या किया है? मैंने एक एलिमेंट चूज किया और सॉलिड स्फीयर के लिए एलिमेंट हमेशा हॉलो स्फीयर होता है. मैंने एक हॉलो स्फीयर चूज किया जिसका रेडियस y है, थिकनेस dy. ये न्यू वेरिएबल आ गया, कॉरेस्पॉन्डिंग d टर्म आ गया. फिर मैंने ये रेड स्फीयर के लिए, रेड हॉलो स्फीयर के लिए, आई टोल्ड यू ना, एक बार एलिमेंट चूज हो जाएगा तो अर्जुन की तरह आपको केवल वो एलिमेंट दिखाई दे रहा है. सो व्हाट डू यू सी इन दिस डायग्राम? वेल, यू सी अ हॉलो स्फीयर, यू सी अ रेड हॉलो स्फीयर. And then you ask yourself, what is the moment of inertia of this red hollow sphere? Because ultimately I want to find the moment of inertia of the solid sphere. So the moment of inertia of the hollow sphere is 2 by 3 into the mass of the hollow sphere into the radius of the hollow sphere whole square. Right? And then you use the unitary method. Mass m is contained in a volume 4 by 3 pi r cube. Therefore, unit volume must contain nothing but density m divided by 4 by 3 pi r cube into the volume of the chosen element. Okay? And the volume of the chosen element, because it is a hollow sphere, it is equal to the surface area of the hollow sphere multiplied by the thickness of the hollow sphere. Then you replace this dm guy, in this. And what is the rationale for doing this? Look, dm is now replaced by dy, so you will be writing a dy here, and there is a y variable. Okay, then you write this, you substitute the value of dm here, rearrange, and then you integrate. अरे दादा भव्य, आखिरी क्लास के नोट्स आप खोलिए. भव्य लास्ट में क्या किया था? हाँ भव्य, आखिरी क्लास में लास्ट में क्या किया था? भव्य, last class, last question. What was the last question of the last class? Yeah. Chalo, now your turn, guys. Your turn. I will come back to this. I will keep this slide. I will come back to this. Find. By the way, अभी जो है हमारा स्टैंडर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमें याद रखते हैं वो फिलहाल के लिए खत्म हो गया. इसमें एक और आएगा टेबल में. टेबल का मेरा मतलब क्या है? यू शुड मेक अ टेबल ऑफ स्टैंडर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. किसका मालूम होना चाहिए आपको? should know the moment of inertia of a point particle of a thin rod, okay, which we have discussed, and then of a ring. Thin rod शायद नहीं किया. Thin rod किया है क्या? You have done thin rod, right? No, Have sir. you done? हाँ? नहीं किया है. नहीं किया सर. हाँ, तो चलिए. This is a good opportunity. A good opportunity to. स्फीयर और रिंग और डिस्क. हाँ, तो अब आपको बिल्कुल सेम तरीके से ये करना है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए thin rod of mass m, length l, about an axis passing through center and perpendicular to what? I'm going to make a diagram also. Thin word का मतलब क्या हुआ? Thin word का मतलब हुआ that हाँ, इसका कोई थिकनेस है नहीं. मैंने बनाया है, जो थिकनेस मैंने बनाई है that is for visual purposes only. चलो,
Please write this down. I'll go back to the previous slide. Bilkul same methodology. Bilkul same methodology. Please write this down quickly. Okay, I'll go back to the previous slide now. Look at the steps. Same steps. बहुत बढ़िया अभिजीत। पहला जो तूने लिखा है वही, दूसरा भी ले सकता है बट उसको फिर इंटू 2 करना पड़ेगा। थिन रॉड दिया है ना उसका, तो थिकनेस क्या होगी? यस, रेडियस कहाँ से आ गया जब थिन रॉड दिया है? बहुत बढ़िया आप गुड अभिजीत। यस, नहीं सत्यम, गड़बड़ है थोड़ा।
So wait, those of you who are still not understanding. नहीं सोनल, गड़बड़ है, गड़बड़ है. Very good, हाँ सकते हैं, सही है. One dimension. So if an object exists in one dimension, then the element is always a point particle. What do I mean by that? Practically इसका क्या मतलब? Practically this means thin slice, two-dimensional, and element is either a ring or a क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, ये क्या चीज, either you take a ring of radius y and thickness dy, हाँ ठीक है, you can call it a segment, yeah. Or you take a segment having thickness dx like L. ये जो x L y dy मैं लिख रहा हूँ, some variables हैं, so they can change. Choose your choice. Yeah. Strip or a strip. This one actually. Strip. And if we have three-dimensional, then element is a hollow sphere or a plane. So first let me write down area of this 2 pi y dy. Area of this area. So for a sphere, for a hollow sphere, I will have y dy volume will be 4 pi y square dy. And for a plane, we will have this as x. This will be some h, this will be some L. So D volume will be equal to LH dx. Okay, this is what you have to remember. Okay, now ये क्या है? वन डायमेंशनल है कि टू डायमेंशनल है कि थ्री डायमेंशनल है? थिन रॉड नहीं, सत्यम गलत. मैंने बताया ना कि that I have drawn the thickness for visualization purposes. I have told you that I have drawn, yes. So since a thin rod is one dimensional, please remember this. Since a thin rod is one dimensional, ring be one dimensional hai, by the way. Okay? So since the thin rod is one dimensional,
We will cut this up into slices. And this will be our element. So this is dx. What is the moment of inertia of this element? Well, the element is a point particle. And we know that the moment of inertia of a point particle is always m into distance square, distance from the axis square. So in this case, it will be dm into distance square. What is dm? Well, you can either write it as lambda dx, which you had picked up the habit in center of mass, but you have, so you can just write it as lambda dx, or you can write it as m by l dx. So di then becomes m by l into x square into dx. Therefore, I becomes m by l into integration of x square dx. And here you should decide the limits. Deciding the limits is easy. Let's look at one extreme and the other extreme guy. इसके लिए x की क्या वैल्यू होएगी? -l/2. इसके लिए क्या होएगी x की वैल्यू l/2? This goes from -l/2 plus l/2. This will give us I is equal to m by l into l cube by 3 minus l by 2 plus l by 2, which will be equal to m by l into l cube by 12, which is equal to ml square by 2. This is the moment of inertia of a thin rod. ml square by 2. अभी आया सबको समझ में? Anybody who is not understanding this, please just tell me, and I will repeat everything if required. If you do not understand a particular step, please tell me. हाँ बोलो ना भैया ज़ोहैब, और मैं क्या प्लीज और क्या लिमिट्स के लिए देखो, लिमिट्स के लिए ये हमने रॉड को स्लाइसेस में चॉप किया। आप इमेजिन करो कि आपने एक तलवार लेके, स्वॉर्ड लेके, आपने इस पूरे रॉड को स्लाइसेस में चॉप कर दिया, जस्ट लाइक वो घर में सैलेड बनने के लिए क्यूकम्बर को स्लाइस किया जाता है। इमेजिन दिस एज ए क्यूकम्बर and you have sliced it very thinly, okay? But you have not taken the slices out yet. The cucumber is still in its original shape, although it is sliced. Now you look at the slices at the very end, okay? So you look at this slice and you look at this slice and you ask yourself, this slice के लिए x की क्या value? What is the value of x for this guy, for this slice? So this is 0. Okay, this is like the x-axis only. This is 0. And we know that the length of the rod is L. And if the axis is passing through the center, this means that the axis must be dividing the rod into two, right? You must understand this. If the axis passes through the center of a rod, then by definition, by common sense, it must divide the rod into two equal parts. Therefore,
this distance must be L by 2 and this distance must be L by 2. So the x value for this guy, x value for this guy, right, must be minus L by 2 and the x value for this guy must be plus L by 2. If you take L by 2 for this and this, basically you are pointing at the two same elements, which you don't want to do. You want to, or what you could do is, you could take the element, बता रहा हूँ, you could take the element, you could take the element from here to here. So you could do from 0 to L by 2. Okay, you could do from 0 to L by 2. ये limits आप change कर दो यहाँ से 0 to L by 2 कर दो. लेकिन फिर जो भी आंसर आएगा, then you have to multiply that answer by 2. Why? Because you would have found the moment of inertia of only this part of the rod if you go from 0 to L by 2. Okay, and then you can multiply. If you are not comfortable with minus L by 2 to plus L by 2, you can go from 0 to L by 2, but then you have to multiply by 2. Okay, ये आया समझ में कि अभी कुछ है और मिसिंग है? Is this understood or not? तो अगर रॉड की एक साइड से हम लोग ले रहे अपना एलिमेंट, तो हम लोग को L/2 तक रखना है। हाँ, रॉड क्या? अगर हम लोग रॉड की एक कोने से ले रहे हैं एलिमेंट, तो हम लोग को जो लिमिट है 0 से L/2 रखना है। अगर आपने एक एलिमेंट यहाँ लिया और यहाँ लिया, x की वैल्यू देखो ना आप, why are you getting confused? X, look at the value of x. For this guy, what is the value of x? For this guy, what is the value of x? For this guy, what is the value of x? आया समझ में अभी? हाँ सर। हेलो, हाँ, भव्य क्या पूछ रहा था? m by l कैसे आया? लेंथ L में भव्य अगर मास m है तो यूनिट लेंथ में मास कितना होएगा? लेंथ L में भव्य मास m है तो हाँ भाई, भव्य लेंथ L में मास m है तो यूनिट लेंथ में मास कितना होएगा? हाँ सर, थोड़ी ना होएगा, कितना होएगा? लेंथ L, हाँ, yes. So basically, when we have one-dimensional objects, so let me add it here. 2 points I need to add here. So the point that I need to add here is that density in this case is mass or charge or something else per unit length, lambda is equal to m by L is equal to dm by dl is equal to dm by dx. बाद में of course this mass will become charge, so it will become dq by dx or dq by dl, right? उसके बाद में maybe it will become current. In that case it will be di by dl, di by dx, whatever. So the notation will keep on changing, but the principle will remain the same. Okay? And the second thing that I want to add here is that the limits are the positions of the extreme elements.
वन डायमेंशन में अगर आपका ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, राइट, सो अगेन रिमेंबर दैट ये मैंने विजुअलाइजेशन पर्पसेस के लिए इसको इतना मोटा बनाया. द एक्चुअल डायग्राम should have been like this. This is a thin rod. In fact, ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि thin rod का मतलब हुआ कि वो वन डायमेंशन में एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी थिकनेस 0 होगी. इस केस में कुछ थिकनेस दिखाई दे रही है. तो हमने क्या किया है कि रॉड के सेंटर से x डिस्टेंस पे हमने इस ऑब्जेक्ट का एक छोटा सा स्लाइस कंसिडर किया है. इसका width dx. Now, if you were to sort of magnify this part, then all you would see is this. All you would see is this. Okay? And if this object exists in one dimension, then obviously you know that dimension, right? I mean, at some point of time, at somewhere at the back of my head, I know that this object exists along the x-axis, and therefore I have taken x and dx. Right? I can take y and dy, I can take r and dr, I can take l and dl, I can take theta and d theta. It does not matter. Why do I fall back, or why do I invariably take x and dx? The reason is that at the back of my mind, somewhere I know that this object is one dimensional and existing along the x-axis. So why not take x and dx? If your object does exist in one dimension, then obviously it is going to be the case where the dimensions of the object are going to terminate. That means that the object that you are dealing with will have finite dimensions. Okay, this will change once we are in gravitation, once we are in electrostatics, once we are in magnetism. We will be dealing with infinite objects then. But at the moment, we are not going to deal with infinite objects. Therefore, it is guaranteed that this object will have finite dimensions. Okay, what do I mean by finite dimension? Finite हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? कहीं ना कहीं जाके पार्टिकल, कहीं ना कहीं जाके ऑब्जेक्ट खत्म हो जाए, नहीं होए. यहाँ पे खत्म हो रहा होगा वो एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ पे खत्म हो रहा है वो एक्सट्रीम पोजीशन, और हमको उस एक्सट्रीम पोजीशन के लिए ये x की वैल्यूज चाहिए, वो लिमिट्स होंगी. There will be the limits. So this distance here and this here will be the limit. So this is L by 2, and therefore this must be minus L by 2, because we are going backwards, right? If we do L by 2 for both, then we are actually not differentiating. We are not, हम दोनों सेम ही ऑब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, दोनों सेम ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते. I hope this is clear. सर एक डाउट है. हाँ, सर अगर एक साइड से लेंगे तो फिर हम जो डिस्टेंस है उसको L/2 माइनस एक्स लेंगे ना? कहाँ से डिस्टेंस L/2 माइनस एक्स? सर m इंटू डिस्टेंस फ्रॉम ये एक्सिस का होल स्क्वायर होता है ना, तो वो डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस जो है L/2 माइनस एक्स होगा. नहीं समझ में आया, फिर से बोलो. सर जो di में dm इंटू एक्स स्क्वायर है, अगर हम हाँ. x को स्टार्टिंग ऑफ द रॉड से ले तो फिर वो डिस्टेंस L/2 माइनस एक्स होगा. तेरा घर कितनी दूर है मेरे घर से, कहाँ रहता है? सर कोपर कह रहे हैं. अब मैं बोलूँ तेरा घर 2000 किलोमीटर 4000 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, मैं खारघर में रहता हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ? हाँ सर. क्यों? इतना दूर थोड़ी ना हो सकता है. मैं दिल्ली जाके तेरे घर आऊंगा, दिल्ली एक तरफ गया 2000 किलोमीटर, वापस आया 2000 किलोमीटर, तेरा घर आ गया. हाँ सही बोला गलत बोला?
सर गलत तो है क्योंकि शॉर्टेस्ट लेते हैं ना। शॉर्टेस्ट लेते हैं क्यों भाई? मैं रोड से आऊंगा तो रोड से तो शॉर्टेस्ट उड़ के थोड़ी ना आऊंगा मैं करेगा। सर ऐसे तो 2 पॉइंट के बीच में कितना भी डिस्टेंस हो सकता है। एग्जैक्टली हाँ। तो ये जो एलिमेंट लिया है मैंने, ये एलिमेंट की डिस्टेंस कहाँ से मेजर की गई? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप किस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन क्या होता है? हाँ सर। Moment of inertia of a point particle is mass multiplied by the distance of that point particle from the axis whole square. हाँ भाई पार्थ, बिना बिना एक्सिस के थोड़ी ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं भाई, तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। हाँ भाई समझ आया तेरे को? हाँ सर तो फिर क्या होगा फिर डिस्टेंस? आ गया? हेलो, हाँ सर। अभी आया समझ में कि L माइनस एक्स क्यों नहीं लेंगे? नहीं सर मैं L/2 माइनस एक्स बोल रहा था। L/2 माइनस एक्स डिस्टेंस आपने यहाँ से मेजर कर ली ना, एंड ऑफ द रॉड से मेजर कर हाँ ली ना। सर मैं वही बोल रहा हूँ। तो मेरे आपके घर का डिस्टेंस कितना है? 4000 किलोमीटर। तो मैं भी सही हूँ फिर, मैंने गलत तो नहीं बोला मैंने। लेकिन कुछ कन्वेंशन फॉलो करने पड़ेंगे ना। इफ आई वांट टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ योर हाउस फ्रॉम माइन, I have to lay down some conventions, right? I can't measure the distance from my house to your house from Vashi. तेरा घर तो 2 किलोमीटर दूर है। कहाँ से 2 किलो? कहीं से तो होगा ही 2 किलोमीटर दूर। तो L/2 माइनस एक्स जो डिस्टेंस है वो कहाँ से कहाँ की है? You can't randomly स्टार्टिंग take ऑफ द this. रॉड से बीच के रॉड। Starting of the rod कहाँ से? Where? How does that come into the picture? It's just like me saying मेरे और तेरे घर के बीच की डिस्टेंस वही है जो अंधेरी से तेरे घर की डिस्टेंस। ऐसा नहीं हो सकता। I would not be wrong. अंधेरी से तेरे घर का डिस्टेंस है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट जस्ट नॉट दिस थिंग। आया समझ में जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? सर तो होगा क्या अल्टीमेटली? क्या हो, किसका क्या होगा? सर मतलब डिस्टेंस होगा क्या? देखो देखो स्लाइड दिखाई दे, ये जो मैं रेड पॉइंटर लगाता हूँ, देखो दिखाई दे रहा है? हाँ सर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बता दे, यहाँ से वो यहाँ तो तक। एक्स है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मेरे को बता दे डेफिनेशन क्या होता है? हाँ सर। सर मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा ना, मैंने एलिमेंट ही उल्टा लिया है। एलिमेंट उल्टा कैसे ले सकता है? सर मतलब मैंने जो एक्स है मेरा वो रॉड के एक एंड से इसके तरफ मूव कर रहा है। पहले क्यों नहीं पता? हाँ सही, ठीक, तो करना है वैसे तो करना है। सर तो फिर L/2 माइनस एक्स होगा ना? हाँ होगा, आंसर भी वही आएगा, आंसर सेम नहीं आएगा। सर आंसर अलग आ रहा है इसलिए तो पूछ रहा हूँ। आपने एक्सिस दूसरी ले ली ना, यू हैव टेकन अ डिफरेंट एक्सिस। आपने तो ये एक्सिस ले लिया ना। हाँ सर। इज इट पासिंग थ्रू द सेंटर? नो। यहाँ पे आपको ये क्या लिखा है ऊपर देखो? Moment of inertia of a thin rod of mass and length L about an axis passing through the center and perpendicular to the- सर तो मतलब एक्सिस से मेजर करना रहेगा, हम लोग कोई और पॉइंट से एक्सिस तक नहीं मेजर कर सकते। हाँ ओके सर। तो जो जोहेब ने किया है वो भैया और कोई ना करे, जोहेब भी ना करे। Please remember that moment of inertia is fundamentally different from the concept of mass. Okay? There are some similarities and there are some differences. Now what happens is that the differences we tend to forget because that is what is new. Similarities we tend to remember because that is what is old.
So I have told you in the last class as well, and I will keep on repeating this, and it is okay to make a mistake like this. The moment of inertia of an object depends upon the axis of rotation. For the same object, there are an infinitely many possible answers. Okay. And it is because of this reason that I have to be very, and you have to be very careful about the definition of the axis of rotation. So what Zoheb has done is that he has forgotten about, and this is absolutely normal, this is absolutely natural. He has forgotten about this blue axis and he says that let me take the moment of inertia, or let me take this as the reference line. Oops. Let me take this as the reference line and let me measure everything from here. But the moment you do that, you have changed the axis of rotation, right? Because di is mass of the element multiplied by distance from the axis of rotation. And ये question जो है मैं अगला देने वाला हूँ. So what the answer that you have given is the actual answer to the next question. So can you take a different axis? No, you cannot. Why? Because for the same object, and this is very weird, you know, it is very difficult to digest. It is very difficult to mathematically understand. Physically, you can understand very easily. So if you were to take a ball and if you were to suspend it by a string and you were to try and rotate the ball, okay, and you were to increase the length of the string, then you will find that the effort required to rotate the ball with a longer string much more as compared to the effort required to rotate the ball with a shorter string. Physically, you will understand moment of inertia, but mathematically, it is sometimes very weird because for the same object, the moment of inertia can have infinitely many values. Okay. So, since Zoheb has already done so, find moment of inertia of a thin rod of mass and length L about an axis passing through one end and perpendicular length of rod. लिख रहे हो मतलब क्या हुआ? पाथ तो नहीं दिखाई दे रहा है क्या कुछ? सर वही स्क्रीन है. ये बाकी लोग को दिखाई दिया जो मैंने लिखा है कि केवल पाथ को दिख रहा है ना? पाथ दिख रहा है सर. हाँ सर. लॉग आउट करके लॉग इन कर पाओ. नहीं राधिका. हाँ करना अभी लॉग इन.
एक्सेस चेंज हो गया ना, ही जो है पता नहीं क्या कर रहा है। आराम से कर, आराम से सोच के। हाँ अभिजीत बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही है। इतना नहीं सोचना है उत्कर्ष। यू टेक ए थिन रॉड। हाँ राधिका बिल्कुल सही। ड्रॉ द एक्सेस at a distance of x. You take a slice. और कैसे भाई, मैं तो ऐसे ही करते आ रहा हूँ ना तब से। Okay, those of you have done this, I'll just change the slide. अच्छा अच्छा, okay. Find the moment of inertia on solid cone. नहीं, था कैलकुलेशन मिस्टेक, फिर से करो। On mass r I h about the axis. So, हाँ सर बिल्कुल सही। हाँ बस लिमिट चेक करना है, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल सही जैसे। हाँ बिल्कुल सही। ये वाला करो, कौन वाला?
बिल्कुल सही, हाँ टेस्ट करके, हाँ हाँ वेट कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। नहीं नहीं बेटा, हम कौन 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 इज मेड अप ऑफ व्हाट? हाउ डू यू मेक अ कोन? कोन इज सॉलिड, कोन इज मेड अप ऑफ व्हाट? अभी तक आपने जिस जिस चीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले हैं उनके बारे में आप सोचो। पॉइंट पार्टिकल का निकाला है, रिंग का निकाला है, डिस्क का निकाला है, होलो स्फीयर का निकाला है, सॉलिड स्फीयर का निकाला है, और फिर रॉड का निकाला है। Out of these objects, which do you think will be most appropriate as an element to make a cone? So basically, you have a cone in front of you and you have a sword in your hand. And if you, Radhika, ये हाँ जोया बिल्कुल सही। राधिका ये गलत आंसर है, डायमेंशनली इनकरेक्ट। किलोग्राम मीटर स्क्वायर आंसर होना चाहिए ना, डायमेंशन वाइज। हाँ बिल्कुल सही। हाँ ठीक है।
hint I will give you. Everyone, please try. Don't sit. Cone is made up of discs. Out of the infinitely many discs that make up this cone, we choose one which is at a distance of y from the apex. Therefore, the thickness is dy. Now, please find the moment of inertia of this disc. नहीं ये गलत है गलत अबे अथर 2/5 mr स्क्वायर कैसे हो जाएगा यार डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है एक सब लोग चार्ट पेपर बनाएंगे ओके चार्ट पेपर या पेपर जो भी करना है डोंट केयर और उसमें आप एक टेबल बनाएंगे ऐसे और यहाँ पे आप लिखेंगे जो ऑब्जेक्ट है वो और यहाँ पे नहीं ठीक है मैं उसी के लिए बोल रहा हूँ ना था मैं उसी के लिए बोल रहा हूँ MOI यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट ओके रिंग डिस्क रॉड होलोस्फीयर सॉलिड स्फीयर ये चीजों के मूवमेंट और इसमें एक चीज और आएगा अभी बाद में आएगा बट ये चीजों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें याद रहने चाहिए वी शुड बी एबल टू रिकॉल दिस विदाउट एनी नोटिस दैट मीन्स दैट ये हमें डिराइव करने का टाइम नहीं मिलेगा ऐसा चार्ट पेपर पे ये बना के और ऊपर चिपका लो आप स्टडी टेबल के ऊपर ओके सो फर्स्ट वो उधर इतना लंबा आंसर आई डोंट थिंक सो DI is equal to dm into x square. dm is equal to m by L into dx. So di is equal to m by L into x square into dx. I is equal to m by L into x square dx 0 to L. This will be ml square by 3. And please take a screenshot of this for those of you who could not do. Very good Zoheb, लेकिन क्यूब नहीं आएगा. Okay. बहुत सिली बहुत छोटी सी सिली मिस्टेक कर रहा है जोहेब बहुत ही छोटी सी. Quickly go through your work and see what that mistake is. Okay, so here Di is equal to the moment of inertia of this blue disk.
about the red axis, and this is equal to 1 by 2 into dm into radius square. Now, what is the radius? Let's say that this angle is theta. Then the radius of the disk will be equal to y tan theta. dm will be equal to m upon क्या होता है भाई वॉल्यूम ऑफ ए पाई बाई 3 क्या होता है जल्दी से बताओ वॉल्यूम ऑफ ए कोन किसी को नहीं याद है pi/3 r². पाई बाई 3 आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 हाँ वही वही लिखा मैंने हाँ मल्टीप्लाइड बाय कहाँ टू आएगा कहाँ टू आएगा वॉल्यूम में 2 आता है क्या मेरे को याद नहीं है 2 पाई बाई 3 होता है आई रियली डोंट रिमेम्बर ऐसे 2 नहीं होता. नहीं होता है ना multiplied by volume of disk multiplied by volume of disk. So therefore dm will be equal to m divided by pi by 3 r square h pi into radius square y square tan square theta into thickness which is dy. पाई कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 3m by r square h tan square theta into y square dy. तब फिर उत्तर कैसे दिया मैंने तो I will therefore be equal to half into dm which is 3m by r square h tan square theta into y square dy into radius square y square tan square theta. This will be integrated from 0 h. So let me write it here now. I is equal to half e tan power 4 theta और y power 4 का इंटीग्रेशन हुआ है h power 5. This is equal to 3 mr square by 10. ये कैसे आया? Because look at the value of tan theta. सर HP होगा. Tan theta is equal to h upon r. Right, sorry, r upon h. R upon h. तो आप देख लो क्या आंसर आता है. सर इसमें हम एक्स मतलब रेडियस को डायरेक्टली y नहीं ले सकते. नहीं राधिका y जो है y is एक मिनट y राधिका is the distance from here.
y is the distance from the apex. So y के value जाएगा will go from सर वो y चूज 0. करना तो हमारे हाथ में है ना, सो why can't we choose that as the radius और उसके लिमिट्स -r to r लिए तो किसके रेडियस आप ले रहे हो? किसका रेडियस? हाँ सर वो फोन तो y को And रेडियस how y को रेडियस? मतलब मतलब डेल्टा अभी का रेडियस। हाँ सर, अभी आपने y tan थीटा लिया तो हम वैसे y तो हम चूज कर सकते हैं ना, तो हम y को ही रेडियस क्यों नहीं चूज कर रहे? बट अलोंग द एक्सिस कैसे हो सकता है? Y परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या y is the distance from the apex to the center of the disk. How can it be the radius? Number one. Number two, what do you mean by negative radius? तो नेगेटिव रेडियस है तो हम लोग उसको ऐसा नहीं ले सकते कि वो एक्सिस से कोन तक का डिस्टेंस हो गया, तो डिस्क हम लोग ऐसे नहीं वैसे नहीं, छोटा से बड़ा नहीं वैसे नहीं ले सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते हैं. You cannot choose this as a variable. This you cannot choose. हाँ, tan square थीटा बाहर आएगा ना, ये कांस्टेंट है. अभी तो 10 पावर 4 लिखा मैंने. हाँ, ये वाला डिस्टेंस प्लीज बी अवेयर, यू कैनॉट चूज एज द वेरिएबल. ओके राधिका? So because it's perpendicular to the axis? No, because it will not make any sense when you have chosen this element. It will not make any sense when you have chosen two different elements. For two different elements, you can always say, oh, look, from the apex, the distance of this element is so. From the apex, the distance of this element is so. Right? But you cannot say for this element, the radius will be so, and for this element, the radius will be. फिर बेसिकली एक भी पॉइंट फिक्स नहीं है, तो हम लोग नहीं लिख पा रहे. Yeah. पॉइंट फिक्स नहीं है, फिक्स पॉइंट से क्या लेना देना? What is the rationale of a fixed point here? खैर फिलहाल इतना सोचना नहीं है. कोन के लिए बाय डिफॉल्ट डिस्टेंस फ्रॉम द एपेक्स रहेगा वेरिएबल. ओके, कोन के लिए बाय डिफॉल्ट द डिस्टेंस फ्रॉम द एपेक्स विल बी द वेरिएबल, नथिंग एल्स. ओके, next. Find NY of hollow cone of mass R I H about the axis. Okay, and before you guys start getting creative, नहीं बेटा, अभी मैं I'll just go back. Before you guys start getting creative, this is the ring. Hollow cone is made up of rings, and when you are dealing with hollow cones, then this distance must be taken as the variable. ये y होएगा और ये d होएगा.
बिल्कुल same. Everything will remain same except the variable. हाँ, क्या बोलना था जोएब? 0 to r. हाँ, 0 to r अगर लेना है, एक बार सोचा जा सकता है, बट आई हैव नो आइडिया कि कैसे करेंगे. और राधिका -r to r तो कोई जाएगा नहीं, 0 to r ही कुछ देखें. एक बार ट्राई करके देखो. इफ यू आर गेटिंग द आंसर देन द मेथड इज ओके. नहीं सर, फिर वही आंसर आ रहा r³ वाला. नहीं, फिर गलत. सर 0 to r लिया तो एलिमेंट ही क्या लेंगे? एलिमेंट तो डिस्क ही ले रहे हैं, लेकिन वो डिस्क में वो येलो वाला they want to ये take the वाले 9 radius ले as रहे a variable. और इसमें 0 to r पे. हाँ, instead of taking y they want to take the yellow wala, the radius as the element. जो राधिका बोल रही थी that it is our choice. It is our choice, yes it is, but I don't think it will give the right answer. I don't know. I'm just नहीं सर, नहीं दे रहे सर. pi equal to pm into dm square, because ring का moment of inertia is mass into radius square. So we need to find dm and we need to find radius. So if this angle is theta, then this radius should be equal to y upon sine theta. dm should be equal to m divided by surface area of a cone. हाँ, 0 to L जाएगा ना. हाँ, पहले कोन का सरफेस एरिया बताइए मेरे को.
कोन का सरफेस है, ये होता है क्या? बहुत अजीब सा है सर, पाई आर रूट समथिंग। क्या pi r into r plus l। ये होता है कोन का सरफेस? सर पाई आर एल होता है ना। हाँ वही तो, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी ना होता है। पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। हाँ वो सर, टीएस पाई से आर वो टोटल सरफेस एरिया है। नीचे हो, यहाँ कुछ नहीं है भैया। हाँ सर, बस कर्व पाई आर सरफेस वाला स्क्वायर। चाहिए ना। हाँ सर, पाई pi आर r। एल होगा। सर तब पाई आर एल होगा। यहाँ पे ये which is equal to under root of r square plus x square into area of the green, which will be equal to 2 pi radius multiplied by thickness. So we get di, pi और pi cancel हो गया यहाँ से, m by r l sin theta 2m by r l sin theta into y dy into y upon sin theta whole square. Radius will be, हाँ ये रहा ना, तो भाई y sin theta क्यों होगा? सर वाई साइन थीटा नहीं है दीजिए। y sin theta होगा, हाँ मैंने सर। उल्टा ले लिया क्या? Sin theta is equal to radius upon y sin theta. Sorry. I just want to write the value of sin theta also. Sin theta will be how much? हाँ भैया समझ में सबको। So there is one more thing that remains in moment of inertia. I'll complete that in the next class. After that, then you can start with this. So we can start with HCV right now. Also. No issue. तो सीए के लिए क्या कर ले? हाँ सीए के लिए क्या कर ले? एचसीवी करने का पूरा।
जोर से बोलना ही सुनाई दिया। सर सीए के लिए हम लोग ये टॉपिक के लिए एचसी भी कर लें क्या? हाँ हाँ करना। So this is the moment of inertia of a solid sphere. Please take a screenshot quickly. हाँ बेसिक क्वेश्चन ही आएगा रजत, मत चिंता कर। Then we found the moment of inertia of a thin rod about an axis passing through the center. Please take screenshots. Then we found, oh हाँ ये बहुत important है। 1 dimension में क्या होता है, 2 dimension में क्या होता है, 3 dimension में क्या होता है। Please take a screenshot. If you have not written already, please take a screenshot. This is the moment of inertia of a thin rod about an axis passing through one end. This is the moment of inertia of a hollow, solid cone. Finally, this is the moment of inertia of a hollow cone. हाँ, किसके याद रखने हैं? ये रहा याद रखने पीछे से। Hollow sphere, solid sphere यहाँ लिखा है मैंने। Okay, it is not cone. Cone का याद नहीं रखना है। याद रहा तो बहुत अच्छी बात है। But it is not imperative. But बाकी सारी चीजों का याद रखना imperative. Okay. So I'll see you guys in the next class. Chalo, bye.